मैं बताऊंगा आपको एग्स के बारे में कि एग का टेम्परेचर एंड ऑल। आई हैव टोल्ड यू राइट समथिंग। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हम बेकिंग करते हैं राइट, बेकिंग टाइम में हमें जो एग्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर में चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि एग के बारे में अपने बेकिंग के चैप्टर्स में राइट, जो मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में ऑलरेडी काफी सारे बेकिंग के चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं, उनमें से एक वीडियो में मैंने बताया था कि एग्स का टेम्परेचर मैटर करता है व्हेन कम्स टू बेकिंग। जब बेकिंग का टाइम होता है तब हम एग्स जो होते हैं उससे हम रूम टेम्परेचर में लेके रखते हैं, ना ही डायरेक्ट फ्रॉम फ्रिज राइट। यदि फ्रिज में भी हो तो आप उसको निकाल के रखें कम से कम 2 घंटे तक का, जैसे कि वो रूम टेम्परेचर में आ जाए, उसके बाद ही हम उसको यूज करेंगे। उसी तरह सॉस में भी, जैसे कि सॉस में जब हम यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका अंडा जो है वो ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है। जो एग हो वो ज़्यादा पुराना ना हो, मीन्स नॉट टू ओल्ड। और जब वो एग योक भी निकले, क्योंकि हम लोग एग योक ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रीमीनेस, नॉट द होल एग, ठीक है। तो जब एग योक को हम किसी के साथ मिक्स करते हैं, किसी सॉस के साथ, फॉर द नाइस टेक्सचर और उसका क्रीमीनेस के लिए जब ऐड करते हैं, तो हम रनी एग को यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स रनी योक को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अब अंडा तोड़ेंगे तो जो योक होगा आपको एक प्रॉपर सेंटर पार्ट योक मिलेगा जो काफ़ी थिक लगेगा आपको राइट। दैट इज द परफेक्ट योक टू ऐड इन योर सॉस, रादर देन कि आपने अंडा फोड़ा और आपको दिखा कि जो एग है वो काफ़ी रनी है, मीन्स वाइट के साथ, मीन्स एल्बुमिन, जो वाइट पोर्शन होता है एग का, एल्बुमिन के साथ वो रनी ना हो राइट। जैसे कि आप इजीली योक को आप निकाल सको, उसी योक को हम यदि सॉस के लिए यूज करेंगे इज दी बेटर राइट। इट शुडंट बी टू ओल्ड और ना ही उसका टेम्परेचर खराब होना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा टाइम तक बाहर रखने से क्या होता है कि अंडा सड़ता है राइट। इसीलिए होम बेकर्स लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अंडे को पहले फ्रिज में रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है कि हाँ अब बेकिंग करने वाले हैं दिनों, कि हम बेकिंग करने वाले हैं अभी थोड़ी देर के बाद, सो उस टाइम में वो अंडे निकाल के उसको रूम टेम्परेचर में रख देते हैं, जैसे कि आपका अंडा खराब भी नहीं होगा और जब रूम टेम्परेचर में चाहिए वो भी आपका परफेक्टली मिल जाएगा राइट। तो ये था कुछ टेक्निक जो हमें ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। थोड़े थोड़े चीजें हैं जो ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप यदि वही रनी योक को यदि आप सॉस में यूज कर लोगे, इट वोंट गिव दैट टेक्सचर, दैट क्रीमीनेस, बहुत सारे चीजों में डिफरेंस आएगा राइट। इन चीजों को समझना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और चीज ऐड करूंगा यहाँ पे कि ट्रेडिशनल सॉस, जो भी मैंने आपके साथ सॉस बताया हुआ है वो काफी ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मेकिंग ऑफ दो सॉसेस। और अभी के जो शेफ जो भी यूज कर रहे हैं सॉस में, काफी सारे इंग्रेडिएंट चेंज हो रहे हैं आज के डे में, क्योंकि नया नया फ्लेवर हमें पता चल रहा है, उसको धीरे धीरे हम सॉस में ऐड कर रहे हैं फॉर मोर नाइस फ्लेवर राइट। इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चीज़ है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो ऑथेंटिक सॉस वे ऑफ मेकिंग है, ठीक है। जब आप पे आता है, हो सकता है कि ये ऑथेंटिक सॉस आपको पसंद ना आए व्हेन कम्स टू टेस्ट राइट। सो इसीलिए उस टाइम यदि आप एडिशनल कुछ ऐड भी करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट टोटल डिपेंड ऑन यू कि आपको फ्लेवर प्रोफाइल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको लगता है कि ये इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका फ्लेवर काफ़ी एनहांस हो जाएगा, then you can use it. It's totally okay if you want to add your own flavor to the sauce, right? See, cooking is not something which is restricted. Cooking is all about something is more of focusing on the flavor, texture, and your palate. When you eat, you should feel like, oh my god, I'm having some really great food. What is a delicious dish for me, for example? For me, it's a pizza. I would like to see the crust, what exactly I am looking for. हर पिज्जा सेम नहीं होता है, राइट? इसलिए हम जब भी कोई भी शॉप जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये पिज्ज़ा मुझे पसंद है, वो पिज्ज़ा मुझे पसंद नहीं है। क्यों? बिकॉज यू हैव योर ओन प्रेफरेंसेस कि मुझे इस टाइप का क्रस्ट चाहिए, मेरे को इतना हाइड्रेशन चाहिए मेरे पिज्ज़ा में, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ टोमेटो सॉस, आई वॉन्ट मोर बेसल इन इट। सबके डिमांड अलग अलग होते हैं राइट। दैट इज ऑल अबाउट, आपको यदि जो ठीक लगे, आपको लगता है कि ये सॉस अच्छा लगा और बाकियों को भी अच्छा लगेगा, देन यू आर परफेक्ट शेफ राइट। एंड दैट इज ऑल अबाउट टेक्निक, स्किल्स, everything matters a lot before you make any of dishes right. So remember, that is like how we generally use and the top professional chefs are using nowadays, right? So that is the way not to waste any of thing, because the shell also has a lot of flavor in it. How to get that flavor is all about finding a good method, and that is one of that, to get a nice shrimp's butter, means a flavored shrimp's butter. Here we go. Next, black sauce, which is a boiled meat and egg. Now you see, we have a caper sauce, which is a boiled leg of mutton. Right? This is the caper sauce, which is the one which is boiled leg mutton to serve with.
So this is all about the velouté sauce, which is all about the fish and meat and shellfish. Guys, clear? So this is all about the velouté sauce, which of this three, and the previous one was for the chicken. Clear? Let's see the next, which we have a tomato sauce. Italian sauce can serve with a small entree, lamb or cutlet and liver. Clear? So this is all about more of a meat, right? Then we have a barbecue sauce. Barbecue sauce, which is an American sauce. Barbecue sauce means generally used for barbecue meat, but nowadays barbecue has a lot more recipes how and what flavor you want in your barbecue sauce. When we get an authentic barbecue sauce, we still add a lot of ingredients, to make it more flavorful. Some people add a lot of garlic powder, honey, molasses, smoke, like the smoke liquid, right? The wooden chip smoke liquid, then honey, then chili flakes, then lots of pepper, then tomato ketchup. So there are many of ingredients we generally use nowadays in a barbecue sauce. So barbecue sauce, what the authentic one I already have shared, right, in my previous video. But nowadays barbecue sauce is not something which is focused on the authentic recipe. It's depend on you what ingredient you want to add, and depend on you what kind of flavor you want to come out with adding your ingredient in it. Clear? Has a lots of recipe. You can see use as a dip sauce or coating sauce. So this sauce is not something just used for one particular thing. Has a many different kind of a recipe and can use it anywhere. Depend on you where you can pair it up. Clear? Then we have a Bretonne sauce, which is for the haricot. Haricot, have you heard about the haricot beans? Haricot word. These are thin French green beans, right? This is actually French green beans, which is also called haricots. Haricots. Haricot word. Clear? It is slightly longer and skinnier than the regular green beans, and it is very expensive. Clear? So this is all about the haricot beans, where this Bretonne sauce has been served in this haricot beans. Clear? This is next. Tomato chaufroid. Chaufroid means what? Hot and cold, right? It's served with the cold chicken eggs. Clear? And next we have here is a Provençal sauce, which is the egg, fish and shellfish. Clear? So this sauce has been served with the egg, fish and shellfish. And here I have another one thing which I want to share with you, which is the cold sauce is served with the cold meat. Then we have a Portuguese sauce, and this Portuguese sauce is served with the eggs, fish and shellfish. Clear with this? So these all are for the tomato sauce. Clear? Next we have a Hollandaise sauce. We have a foie sauce, which is a grilled and sautéed meat. This sauce is only for the meat. You can see here grilled and sautéed meat. Clear? You see here the mustard, which is the meat and steak. See, Hollandaise sauce, that is very rich, and when this sauce will go with the meat, it tastes really great because the moisture of the meat and the creaminess of the Hollandaise sauce pair up very well. And this is also called temperament sauce. I hope you have watched the previous videos, right? The part 1, part 2 of this. You would have known there's another name of a Hollandaise sauce. I hope you remember. So here we go. You can see mustard, which is a steak and meat. The next we have a Muslin Sauce, which is a fish, eggs, vegetable and meat. You can see like here we can see a lot of meat, but what are you going to get it? Because the Hollandaise sauce is one of the best when it comes to pair with the meat, right? Creaminess like next level. Then we have Béarnaise sauce, which is all about the grilled fish, again meat, which is the steak. Clear? Then we have Choron, which is for the grilled or sautéed meat. Then we have a Noisette sauce, which is about the poached salmon and trout. See, Hollandaise sauce, you can see the most of the derivatives that will be served with the meat, and there's the only one here we have, which is poached salmon or trout. These all are the fish. Clear? Or else you can see most of things are the meat. So whenever you are making some of a few meat, or you can say grilled meat, then make this Hollandaise sauce. It will really get a nice
pair with that meat that what you have already grilled. So try to figure it out and use the Hollandaise sauce, but not only Hollandaise sauce, add some of few flavor to that. And those are the derivatives. Clear? You can use your own sauce, you can say white sauce, you can use mustard sauce, the basic. This is all about the Hollandaise. Hope you guys clear with this, right? Then last not the least is the mayonnaise. Let's figure it out. Mayonnaise sauce. I love this sauce. The derivatives of this are delicious. Let me tell you that if you love mayonnaise, then do make this all derivatives. You will love this. Let's figure it out. First we have a Thousand Island, which is the dressing, right? So it's going to be used for the cold meat. Then we have a cocktail, which is generally for the shellfish. Then we have a remoulade, which is about the fried fish, right? You can see here lobster, cold meat, and poultry, right? Is for the remoulade, which is served with this particular things. Clear? Then we have the Cambridge sauce, which is prepared like mayonnaise for the cold meat. Cambridge sauce is another like a mayonnaise process. Then we have to use the mortar, right? You have to continue moving it, and slowly gradually it'll start emulsifying. It's prepared like a mayonnaise. It's about like emulsifying, right? This tastes so good, right? And then we have a chantilly served with the vegetable and cold dishes, right? And this is all about the mayonnaise, and the items, or you can say the derivatives, going to be served with. This is a normal basic idea that what I have shared with you. Then again, बार बार मैं आपको बोल चुका हूँ कि it will depend on you that how you want to use this sauce. But इसको आप follow करने के बाद यदि आप additional आप अपना want to make your sauce, or additionally want to know that कि यार और भी कुछ हम add कर सकते हैं, and I can change this recipe to the next level, and I can pair with any of a meat and it will taste good, then you're most welcome. Just go ahead, right? And this is all about a general knowledge that where we can serve with, means which is already paired with the derivatives. So this is all about the derivatives and served with session, right? This is the part 3. पहले नहीं देखा होगा आपने first part, second part. ध्यान से देखिएगा, काफी सारी चीजें clear हो जाएगा, right? So till then, derivative sauce. I'll see you in the next informative video. Lot more informative video coming soon. Bye bye.